High class 9th standard. Let's learn geometry today. Last lecture we learned 1.1. Sorry, algebra. Algebra 1.1. Today we are learning what 1.1, 1.2. Before that, let's learn. So, my answer on coaching classes, Maths 1, algebra. So before that, let's learn some concept we related to the 1.1, 1.2. Okay, from your textbooks. It's your textbook here. In last lecture, you learned that's 1.1. Right now, 1.1. Most of students completed their the homework. सबने अपना अपना होमवर्क कंप्लीट किया होगा. क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, all of you completed. So जिसने भी किसने नहीं किया होगा तो जल्दी से जल्दी आपका होमवर्क कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप कर देना. पर्सनल नंबर पे व्हाट्सअप करना है. सो ऑल ऑफ यू जितना होमवर्क करते रहेंगे उतना आपको वो इजी रहेगा, क्योंकि एवरीडे लेक्चर तो चलेगा. एवरीडे आपको होमवर्क मिलेगा. नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही नुकसान है. सो जितना हो सके उतना होमवर्क कंप्लीट करते रहे, टाइम टू टाइम कंप्लीट करो. ओके, हम पढ़ने वाले टुडे वी आर लर्निंग व्हाट इज द टाइप्स ऑफ सेट्स. टाइप्स ऑफ सेट्स, different type of sets are there. See here, types of sets. First one is a single tone set. Set two types of sets. Set we can write two types. Listing method या roster and set builder form. These two methods to write the set. Types of set here, single tone set. Single tone set means set consisting of single elements is called single tone set. Single elements, only one elements. एक की ब्रैकेट करली ब्रैकेट के अंदर एक ही एलिमेंट होगा. So for example, यहाँ पे a is equal to curly bracket 2. So a is a set of even prime number. This which method? This method is called what? Two methods. Which one? First one is the listing method, yeah, roster form. Second is the set builder form. This method is called set builder. Right? A is a set of even prime numbers. Understand? एक ही एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर क्या होगा? एक ही है. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. इवन प्राइम नंबर कितने? एक ही है. कौन? 2. So it is a single tone set. What called? Single tone set. समझ गया? Now empty set or the null set. Empty का मतलब nothing, कुछ भी नहीं है. जिस ब्रैकेट के अंदर, करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? empty set or the null set. Null, nothing. If there is not a single element in the set which satisfy the given condition, that is called null set or the empty set. Null set is represented by curly bracket के अंदर कोई भी यहाँ पे एलिमेंट रहेगा नहीं. और सिंबल इज कॉल्ड phi. जीरो ड्रॉ करना है और जीरो के पास लाइन ड्रॉ करना है. बस जीरो जीरो के बीच में क्या करना? लाइन से कट करना. इज कॉल्ड phi. Example here, x is a natural number between 2 and 3. All of you natural number कल लेक्चर में पढ़ाया था. 1, 2, 3, 4 up to the infinites. So x is a natural number between 2 and 3. 2 and 3 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर है क्या? है क्या कोई? नो. Therefore b is equal to करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? नेचुरल नंबर बोला है. रियल नंबर बोलते तो यहाँ पे आ सकता था 2.1, 2.2, 2.3, but here natural number, so natural number between 2 and 3 there is a no any. So b is equal to curly bracket के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखना नहीं है. empty और is a null set, that is a phi. सिंबल इसका क्या है? phi. b is equal to phi.
Next is a finite set. Finite का मतलब suppose in your school class 9A, set of class 9A in school. So we can say that how many students are there. We can count at 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to the 60, 65, 67. Suppose 70 students are there in class. That is, we count it. We can say this limited are there, right? So it's called the finites. What called countable, limited. That's why it's called the finite set. So definition here, you should be right. It's finite set if a set is a null set or number of. If a set is null set or number of, null set is also finite. Because null set में कोई भी element नहीं, कितने element यहाँ पे 0 है. Set or number of the elements are limited and countable, then it is called a finite set. Example, C is equal to curly bracket P. This line is indicate that what such that P is a number from 1 to 22 divisible by 4. Divisible 4, 1 to 21 numbers 4, 8, 12, 16, 20. Right now, that is 4, 8, 12, 16, 20. These are what is a countable and limited. Countable and limited is called finite set. Countable and limited set is called the finite. Countable and what is the limited. दो word याद रखो. Limited and what is the countable. Limited भी होना चाहिए और क्या countable भी होना चाहिए. It's called finite sets. समझ रहे ना? First कौन सा set? Singleton set. Second कौन सा है? Empty set. Is also called null set. Next is a finite set. Do you understand the meaning of finite set? Say okay. Yes. Next, infinite set. If number of element in a set is unlimited, limited यहाँ पे क्या था? Unlimited और क्या? Uncountable. Then it is set is called the infinite set. For example, natural number. Natural number count from 1, 2, 3, 4 up to what? Infinite. बहुत सारे unlimited है. Lakhs, crores. ये सब कौन है? Infinite है. Or whole numbers, integer numbers, real numbers, all they are what? Infinite sets. Infinite set, finite set, empty set, and is a singleton set. Do you understand it? Now, all of you open notebook your types of set right there. Make this table or write singleton set, write definition, then example, then write empty set second, null set, definition, then write what example, finite sets, definition, and what is the example. You should be write in your notebooks. Okay. Now see next here, write the following set using the listing method and classify into finite or infinites. This forms over A is equal to X, such that X belongs to N and X is a odd number. इसको ये जो मेथड है कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म है. सेट बिल्डर फॉर्म को हमें क्या करना है? लिस्टिंग मेथड में पहले कन्वर्ट करना है. ओके. सो फर्स्ट लुक एट ए एक्स एक्स. पहले जो क्वेश्चन दिया वो आपको पहले कॉपी करना है आंसर में यहाँ पे. X as X belongs to means X is the element of N and X is an odd number. So X is an odd number, belong to natural number. Natural numbers are infinite, right? So first natural number is a 1, then 3, 5, 7, 9, 11, 13 up to infinite. So write dash dash curly bracket complete. Now this set, look here, the elements are infinite, unlimited are there, right? Uncountable, कितने बहुत सारे हैं. That's why this is an infinite set. क्या बोलेंगे इसको? This is an infinite set. Second example is here, b is equal to x, x belongs to n and 3x minus 1 is equal to 0. It's second example. अभी यहाँ पे आपको क्या दिया है? X is a natural number. X is element of natural number. And but condition what? 3x minus 1 is equal to what? 0. Let's see what is the value of the x here. This is the equation. Linear equation in one variable. 3x minus 1 is equal to what? 0. So right here 3x minus 1 is equal to 0. Simplify. That is minus 1 change to plus 1. Means 0 plus 1 is a 1. 3 multiply change to divide. That is x is equal to 1 upon 3.
but 1/3 is a fraction. Fraction is not a natural number. Is not belongs to. तो यहाँ पे क्या आएगा? Not belongs to. Means 1/3 is not belongs to n. So b is equal to curly bracket. कोई भी एलिमेंट यहाँ पे आएगा नहीं. मतलब ये क्या हो गया? Null set. Null set is also called as a finite set. What? Null set is what? Finite set. एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब जीरो एलिमेंट यहाँ पे. एलिमेंट कितने यहाँ पे? जीरो एलिमेंट है. So it is a countable, limited. So B is what? Finite set. Got it? Got all of you? Now C is equal to x. X is a natural number. X is divisible by 7. Divisible by 7. 7 के multiple जितने भी है वो सब. All of them 7 the table. 7 1 7. 7 2 14. 7 3 21. 7 4 28. 7 5 35, and so on. Dash 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 dash. That's why C is equal to right curly bracket. पहले जो मेथड सेट बिल्डर फॉर्म दिया है उसको हमें क्या करना है? लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. C is equal to 7 14 21, you can write 28 35 dash dash. This is a infinite set. What is a infinite set? Unlimited, infinite हो गया. Now next example is a very interesting. Look here, very important example here. D is equal to curly bracket in bracket a comma b, and a and b both are belongs to a W. W means whole number. Whole number what? 0 1 2 3 up to the infinites. So a plus b is equal to 9. Now find the number which are the whole number pair of this number whose sum is what? 9. So for example 0 plus 9 is equal to 9. 1 plus 8 9. 2 plus 7 is equal to 9. 3 plus 6 is equal to 9. 4 plus 5 is equal to 9. 5 plus 4 9. 6 plus 3 9. 7 plus 2 9. And 1 plus 8 is a 9. In this way you got the pairs. These pairs are, let's first write the value of the a and b, then the value of b. By putting the value 0 9 1 8 up to the 9 0, you got this set. All these are the what is the limited, countable are there. In this set, number of pairs are finite and could be what is a counted. That's why D set is what? Finite or infinite? It is a finite, or it is called a finite set. Next example, solid example here. E is equal to x, such that x belongs to I. I means what? Integer. Integer means negative, positive, 0. All negative number, all positive number, and 0. And x square is equal to 100. X square 100, taking square root. 100 square minus 10 square is 100, plus 10 square also 100. So you got answer E is equal to minus 10 and it is a plus 10. Both are limited, so it is a finite set. A comma b, a b belongs to q. Q is what? Rational number. Rational number यहाँ पे आपको बहुत सारे मिलने वाले. Because 6 plus 5 ये तो रहेगा. Minus 15 20 से ये भी रहेगा. Decimal में रहेगा यहाँ पे. That's why it is a infinite. Decimal मतलब 2.5 plus 9.5 करेंगे तो भी कितना आएगा? 11 ही आएगा. राइट? ऑल डेसिमल्स, पॉइंट, फ्रैक्शन, वो सब आने वाले. दैट्स व्हाई a प्लस बी को 11. यहाँ पे देखो a प्लस बी 9, यहाँ पे होल नंबर था. दैट्स व्हाई फाइनाइट. बट यहाँ पे बहुत सारे आने वाले. दैट्स व्हाई और देयर इज अ इनफाइनाइट. Many such pairs can be there, and so we cannot be count. Uncountable are there. That's why it was the infinites. Now natural number, whole number, integer number, rational, irrational, real number, all of these set are infinite set. इसमें से कोई भी set आपको पूछेंगे तो आपको क्या लिखना है? वहाँ पे infinite ही लिखना है. Right? What? Infinite set. Got it, all of you? These all examples are there. Next all example question number here. से इक्वल सेट के बारे में दिया है. इक्वल सेट means equal, that is elements in a set A, elements set in B, both are the same and number equal, then say set A and set B are equal. दोनों सेट में दिया हुआ एलिमेंट सेम होना चाहिए, और जितने हैं ए में है उतने बी में होना चाहिए, जितने पी में उतने क्यू में है, तो पी और क्यू इक्वल हो गया. ए और बी में इक्वल, ए और बी इक्वल हो गया. ए बी सी 3 सेट दिए आपको, तो तीनों में सेम एलिमेंट रहेंगे, उनका अरेंजमेंट आगे पीछे रहेगा चलेगा.
लेकिन सेम होना चाहिए. That's they are called as a equal set. Two set A and B are said to be equal if they every element of set A is in a set B and every element of B is in set of A. A's elements in a B and B's elements in a A, all they are what is the same. Then we call A and B set are the equal. Set A and B are equal set, symbolically written as A is equal to B. Symbolically written as A is equal to B. A and B are what are they equal? For example, here A is equal to X such that, here example, X such that X is a letter of word listen. This method is what? Set builder form convert into roster form. Set builder form is a convert into what is a roster form. That is a is equal to L I S, देखो L I S T E N कॉमा दिया यहाँ पे. ओके. B is equal to Y से Y is the letter of word silent. So yes I yes comma I comma L comma E comma N comma T. Done. Now check the element. L is there. I is present. Yes present. T presents. E present. N presents. Right. A elements and B element both are what is the same. Element यहाँ पे आगे भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे सेम होना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 are same है. Element of A is present in B and B element present in A. Element of A present in a B, element of B present in a A. So A is equal to B. That is the set A and B are what is the equal. Though the element of set A and B are not in the same order, but all the elements are identical, same. That's why A is equal to B. This is the second example. Example number 2. Solve example. Y is equal to X, the X is equal to N. N is belongs to N, natural number. Means ये जो small n है कौन है? Natural number. 2n मतलब 2 into 1, 2 1 जा 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6. ये नंबर आएंगे, right? And value of X is a लेस देन इज इक्वल टू. इसका मतलब 0 से ग्रेटर है, 10 से लेस है. X is greater than 0 and less than is equal to 10. So number 1 2 3 X. Okay, X is equal to, by putting value here 1 2 3 4, what you got? 1 into 2 2, 2 put here, 3 put, 4 5. Look at X is equal to, X value is must be less than 10. 1 into 2 2, 1 into 3 is 1 into 2 is 2 into 2 is 4, 3 into 3, 3 into 2 कितना हो गया? 6, 4 into 2 is 8, 5 into 2 is equal to 10. But 6, if we take the value of the n, we got 12, and 12 number is what is the 12 number is greater than 10. And यहाँ पे condition क्या दिया है? X must be equal to 10 and less than 10. X 10 से greater नहीं होना चाहिए. That's why we got this set. ये आ गया आपका listing method. Y is even numbers, and y is less than is equal to 10 and greater than 1 is equal to 1. 1 भी आएगा वहां पे, लेकिन even number 1 is not even number. नेक्स्ट नंबर कौन सा? 2 4 6 8 और क्या 10. 10 भी रहेगा. मीन्स एलिमेंट्स ऑफ A and elements of C B are identical. 2 2 है, 4 है, देखो 6 है, 8 है, 10. A is element present in a B and B is all element present in a A. A is all element present in B and B is all element present in A. That's why set A and B are equal. Now think of the following set here. C set, D set, 1 3 5 7 2 3 5 7 are not equal. So C is not equal to D, D is not equal to C.
1 is belongs to C, 3 is belongs to C, not belongs to what is a D. 1, 3, 5, 7, 3, 5, 7 belongs, but 2 is not belongs to C, 1 is not belongs to D. Means 1 is not element of D and 2 is not element of C. That's why these two sets are not equal. Similarly, A is equal to B is equal to here 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 4 element, यहाँ पे 3 है. So A is not equal to B. Verify it. X the prime number and X values are greater than 10 and less than 20 prime number, which are two factor only. One, it's 1 and number itself. Now, okay, so 5 has factors 1 and 5, 7, 1 and 7, 13, 1 and 13. Number greater than 10 and less than 20. Means first 11, 13, 17, and what is the 19? 11, 13, 17, 19. Now A is equal to B. A set and B set are they equal? X the prime numbers. Prime number यहाँ पे कितने आएंगे? A is equal to 11, 13, 17, 19 ये आएगा ना. और B में क्या देखो 11, 13, 17, 19 है. आप बुक में सॉल्व करना है इसको. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों सॉल्व करना है आपको. I explain it. Next see, practice set 1.2, question number 1, question number 2, question number 3. Question number 1 says decide the following equal sets and which are not. Justify your answer. A is equal to given, B is equal to, C is equal to. D, decide whether set A and B are equal set. Give reason for your answer. A is equal to, B is equal to, and which of following are empty set. Why? Reason देना है आपको. Okay. And next to last question यहाँ पे 4 question. Write the reason which of the following sets are finite and infinite. Finite मतलब limited, infinite मतलब unlimited. ये आपको बताना है. Okay. Let's see the solve 1.2. This is the question here. Practice set 1.2. आपके सामने first question. That is decide which of the following are equal sets and which are not. Justify your answer. A is equal to what you want? X such that x 3x minus 1 is equal to x such that x is a natural number but x is neither prime nor composite. ऐसा natural number कौन सा है? Natural numbers for 1, 2, 3, 4 up to the infinite, but which is neither prime nor composites. Is the only one is there. One first one. Which is a natural and what is a prime, natural number, prime as well as a composite. जो prime भी नहीं, prime neither prime nor composites. And third यहाँ पे C x and x is a belongs to n x value is less than 2, natural number less than 2 or 1. और ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3x minus 1 is equal to means 3x is equal to minus 1 is equal to plus 1 3. 3 divide 3 what 1. यहाँ पे भी x का वैल्यू 1 मिलेगा, यहाँ पे x का वैल्यू 1 मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा 1. This question क्या है? Decide which of the following are equal set. A set is equal to 1, B set is equal to 1, C is equal to also 1. So we can write here. See the answer. X इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व किया. X कितना मिला आपको 1. So A is equal to क्या लेगा यहाँ पे मैंने? See, I'm using cursor here, laser point. A is equal to 1, B is equal to क्या मिला? 1 मिला यहाँ पे, natural number but x is neither prime nor composites, and C is equal to 1. So A is equal to B is equal to C. That is A, B, C are what? Equal sets. समझ गया? Open notebook, your copy it in your notebooks. Take down your books, write it, or take the screenshot. Okay. Next question, see. Next question from practice set 1.2. Question number 2. Decide whether the set A and B are equal set. Equal set में क्या होना चाहिए? Element of A and element of B must be equal. Means A element must be present in a B and B element must be present in a A. And दोनों equal number होना चाहिए. First here, A is equal to even prime numbers. A is equal to even prime number. Even prime number कौन से? Even prime number कौन है?
इवन भी है, प्राइम भी है, 2। और ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिला, 7x minus 1 13, that is 7x equal to 14, that is x is equal to 2, means a is equal to 2 and b is equal to, simplify here, right? That's why set a and set b are equal, set a is equal to b. Now next question, which of followings are empty set? Empty means null set, जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, नथिंग इज देयर, एम्प्टी, ओनली कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट में एक भी एलिमेंट रहेगा नहीं, इज कॉल्ड एम्प्टी सेट्स. फर्स्ट, a is equal to, a is a नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 0. अब स्मॉलर देन 0 तो नेचुरल नंबर कोई है क्या? इज देयर एनी नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 से लेस कोई है क्या? नहीं. तो कर्ली ब्रैकेट के में क्या अंदर क्या आएगा, a is equal to, कर्ली ब्रैकेट एम्प्टी हो गया, a is what, एम्प्टी सेट. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, b इज इक्वल x इज इक्वल 2x इज इक्वल 0, 2x 0 में x इक्वल 0, और नीचे देखो 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे देखो x 2x इज इक्वल 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 डिवाइड 2, 0 अपॉन 2, x इक्वल 0, एंड 5x माइनस 2 इज इक्वल 0, दैट इज x 5x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, 2 अपॉन 5 is not belongs to natural number. यहाँ पे x क्या बोला है, नेचुरल नंबर बोला है, but 2 upon 5 is its natural number? No, is a q, what is a rational number. That's why यहाँ पे empty set आएगा क्या, yes, 0 is element, 0 element है ना अंदर. तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स, and that what's 2x is 0, that is x is 0, 2x is 0, that is x is 0, b is equal to what, 0, 0 is the element here, so b is not a empty set. And next one, 5x equal to means x is 2 upon 5, it belongs to w, it is a whole number, sorry, w integer numbers here, sorry, there should be I. Not natural number, so c is equal to what is the curly bracket, empty, c is a empty set. Okay, copy it in notebook QR. लिखा सबने, फटाफट लिख देना आंसर. पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन नोटबुक yours. आपको कोई लिखना है, कुछ करना है तो वहां पे आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो. ओके, सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राइट विथ रीजन which of following sets are finite or infinites. Means a is equal to x, x belong, x is less than 10, x is a natural number, तो नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, x less than 10, 1 2 3 4 up to the 9. तो लिमिटेड है, लिमिटेड एंड काउंटेबल इज कॉल्ड फाइनाइट, अनलिमिटेड अनकाउंटेबल इज कॉल्ड इनफाइनाइट. सिंपल है, बहुत इजी है. बस आप खाली थोड़ा प्रैक्टिस करते रहना, बस आपका प्रैक्टिस. दिस बिलोंग टू 1.2. सो फर्स्ट आंसर हियर, a is equal to 1 to 9 number, that is limited, countable, so a is a finite set. Next one, b, y is the y is a less than -1, y is the integer number, -1 से less है, -2 -3 -4 -5 -6 negative number सब रहेंगे, right? So I am writing here in curly bracket, b is equal to -2 -3, here these are b is equal to -2 -3 -4 -5 up to the infinite, so it's a unlimited, that is a b is what, infinite set. So I written here b is equal to infinite set. Next one is a, next क्या देखो, third one, C is a set of student class 9 from school. पहले आपको बोला था, mean your school students can be countable, limited है, 70 तो 70 रहेंगे, किसी क्लास में 60 रहेंगे, countable है, so it is a finite set. This should be your answer, what, finite, limited, countable set. C is what, the finite set. एंड नेक्स्ट जो है आपको यहाँ पे क्या करना है, सेट ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज, योर विलेज काउंटेबल है, सेट ऑफ होल नंबर अनकाउंटेबल अनलिमिटेड इनफाइनाइट होगा ये, सेट ऑफ एपेरेंट्स लेबोरेटरी काउंटेबल, सेट ऑफ रैशनल नंबर
देखो सेट ऑफ रैशनल नंबर, बहुत सारे नेचुरल नंबर जैसे होल नंबर है, रैशनल नंबर है, दे आर द अनलिमिटेड, अनकाउंटेबल, सो दिस इनफाइनाइट्स, क्या बनेगा इनफाइनाइट। सो डू इट योरसेल्फ, you have to write the answer there, so I make here question mark आपके लिए ये। so here 1.2 completed, so all of you, किसी को समझ, once again back to your screen में problems, okay, in this 1.2 completed, now all of you practice at home and show it homework tomorrow, आप tomorrow दिखाना, 2-4 दिन के बाद दिखाना मत, okay। in this way we learn today's 1.2 और उसके ऊपर जितना भी दिया था होमवर्क वो सब हमने शेयर किया है। देखो यहाँ पे हमने 1.2 का 2 के पहले बहुत सारे 1.2 का क्वेश्चन जो है, सी ये 4 क्वेश्चन देगा, उसके बाद इक्वल सेट का मीनिंग देगा, वहाँ पे इक्वल सेट्स इसको बोलते हैं। नेक्स्ट वही इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल भी देगा, ये आपको बुक में कॉपी करना है पूरा, प्रैक्टिस है 1.2 भी पूरा आपको लिखना है। नेक्स्ट जो है इसका कुछ डेफिनेशन जो आपको बोला था यहाँ पे, ये सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको करना है बुक में से, पीडीएफ बुक नहीं तो पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करो वहाँ पे और कॉपी करना, ओके। इस फुल पेज यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, क्योंकि एग्जाम में सॉल्व एग्जाम्पल भी पूछते हैं, सो सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको आना जरूरी है। और उसके पहले जो इसका मीनिंग जो टेबल दिया बोला था आपको 1.1 के बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेट्स, जो सिंगल टोन सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, फाइनाइट और वर्जन इनफाइनाइट, इतने टाइप जो दिए ये पूरा आपको बुक में लिखना है। और लिख रहे तो आपको थोड़ा सा कलर पेन यूज करेंगे इसको अंडरलाइन करने के लिए वगैरह, तो अच्छा रहेगा, ओके। सो ऑल ऑफ यू डू हार्ड वर्क्स, प्रैक्टिस एट होम, ओके, बाय नाउ। नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे, तब तक स्टडी करते रहो।